तो इस चैप्टर में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो मोड होता है रिप्रोडक्शन का जिसमें एक सिंगल पेरेंट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और यहाँ पर्टिकुलरली आपने जो एसेक्सुअल मोड है मेथड के, उनमें बाइनरी फिशन, बडिंग और क्लोनिंग ये पढ़ेंगे। ये वाले मेथड्स आपने देखने हैं, समझने हैं। Define asexual reproduction. Explain the method of binary fission using the amoeba as an example. Explain the method of budding using the hydra as an example. And explain the process of cloning. Peter, you just saw me cut a branch off this rose plant and plant it. What do you think this branch will grow into? A rose plant, of course. That's right. And that is how a rose plant reproduces asexually. You may be surprised to know that animals can reproduce asexually too. Some organisms can reproduce without bonding with another individual of the same species. In asexual mode of reproduction, only one parent is involved. That's an interesting fact. Which organisms reproduce asexually? There are many organisms that reproduce asexually, but let me tell you about asexual reproduction in the amoeba and the hydra. तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आप देख रहे हैं, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, हाइड्रा, यीस्ट और क्लाइमाडोमोनास। इन सब में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पर पर्टिकुलरली आप लोगों ने अमीबा और हाइड्रा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है और समझना है। The amoeba reproduces by the method of binary fission, while the hydra reproduces by the method of budding. Like I said, an amoeba reproduces by the method of binary fission. Can you guess why this method is called binary fission? It sounds... अब देखो बाइनरी का मीनिंग क्या होता है, टू। तो जब एक ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो जाता है, या हम यहाँ बोलें पर्टिकुलरली अमीबा के केस में कि एक ऑर्गेनिज्म जब मैच्योर हो रहा है, अमीबा जब मैच्योर होता है तो वो स्प्लिट हो जाता है दो नए ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि टू ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्मिंग हियर, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज बाइनरी फिशन। फिशन माने टूटना। It's like it has got to do with splitting of something into two. Very good. That's a very intelligent answer, Peter. You already know that an amoeba is a simple unicellular organism. Reproduction in an amoeba begins with the division of the nucleus into two nuclei. तो सबसे पहले आपने क्या देखा, अमीबा में न्यूक्लियस डिवाइड होता है, दो न्यूक्लियाई बनेंगे और उसके बाद ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये स्प्लिट होता है। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, आफ्टर दैट साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। Thereafter, the body of the amoeba splits into two. Each part receives one nucleus. This results in the formation of two individual amoebae. This form of reproduction, where one parent organism divides itself to form two individual organisms, is referred to as fragmentation or binary fission. Binary fission was quite simple. How about budding? Is that similar to the blossoming of a flower? Not really, Peter. Let me show you this slide of hydra. What do you see through the microscope? Do you think you can draw what you saw? That's good, Peter. Let me show you some more images. Look at these diagrams. Do you see the bulges? अब ये देखो, ये हाइड्रा है और हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो कि वाटर में ही रहता है।
ये आप देख रहे हो एक स्मॉल आउटग्रोथ हो जाती है जब हाइड्रा मैच्योर होता है, तो इसकी बॉडी पर ये छोटे छोटे बर्ड्स, इनको हम बर्ड्स बोलते हैं, स्मॉल आउटग्रोथ्स है जो इसकी बॉडी में डेवलप होने लगते हैं, और धीरे 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 ये डेवलप होंगे और ऐसे टेंटेकल्स फॉर्म कर लेंगे। जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाएंगे तो ये अपने आप को पेरेंट बॉडी से डिटैच कर लेगा, सेपरेट हो जाएगा और एक नया हाइड्रा की फॉर्मेशन हो जाएगी। They're similar to the ones that you have drawn. The bulges that appear as outgrowths in the body of Hydra are called buds. The buds keep increasing in size until they separate as new individuals. This method is referred to as budding. I get it. The method is called budding because the buds separate and grow as new individuals. That's right. Peter seems to have understood this concept well enough. Wow, that was really interesting. I've seen such things happen in sci-fi movies, but I didn't know this was another way of reproducing. They talked about creating genetically identical sheep. I wonder how a clone is created. A clone is created by inserting the complete genetic material of a regular body cell from a donor into another living organism that acts as a recipient. तो अब यहाँ पर देखो क्लोन्स बन रहे हैं। क्लोन्स मतलब यहाँ एक जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपी होती है ऑर्गेनिज्म की, सिमिलरली यहाँ क्लोनिंग में तो यहाँ लिखा हुआ इट इज creating an exact copy of a biological entity by inserting the complete genetic material। अगर मुझे इसकी कॉपी चाहिए तो इसका पूरा ये जेनेटिक मटेरियल, ये देखो क्या है, डीएनए, इसको हम क्या कर रहे हैं, ये डोनर है, डोनर से इस रिसिपिएंट में हमने ये क्या कर दिया, डीएनए इंसर्ट कर दिया। तो अब ये जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वो ये सिमिलर कॉपी इसकी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, ये क्लोन हो गया इस वाले ऑर्गेनिज्म का। The process of creating an exact copy of a biological entity is known as cloning. Cloning differs from other forms of reproduction because it needs only one cell and occurs asexually. How is that? I thought sheep were viviparous animals. That's right. They are viviparous animals. However, Dolly is an exception. Dolly was the first cloned mammal. Do you know who created Dolly? Yes, I heard that on the video. It was Sir Ian Wilmot, and Dolly was born on July 5th, 1996. I see you were quite attentive. To create Dolly, 2 female sheep of different species were first taken. One of them was the Finn Dorset species, and the other was a Scottish blackface ewe. A normal cell was collected from the mammary gland of the Finn Dorset sheep, and an egg was obtained from the Scottish blackface ewe. What happened after that? Next, the nucleus was removed from the egg. The enucleated cell and the mammary gland cell of the sheep. अब देखो, इसका जो एग लिया गया था उससे न्यूक्लियस रिमूव कर दिया गया और ये वाला जो सेल था उसको इंसर्ट कर दिया इसमें। तो अब न्यूक्लियस क्योंकि फिन डॉर्सेट शिप का था तो इसलिए जो डॉली बनी वो एग्जैक्ट क्लोन बनी फिन डॉर्सेट शिप की। उसमें स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव का कोई भी करेक्टर नहीं था क्योंकि स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव का न्यूक्लियस पहले से ही रिमूव कर दिया गया था। With the nucleus were then subjected to an electric pulse to cause fusion. This fusion created a zygote, which then divided to form an embryo. And the embryo turned into a fetus, and Dolly was born. Well,
You're partially right. The embryo did turn into a fetus after undergoing further cell division. But there was an intermediate step. The embryo was implanted into the uterus of the ewe and was then allowed to develop normally. And that's how Dolly was born. देखो, ब्लैक फेस ईव ने इस डॉली को बर्थ दिया था. आगे की डेवलपमेंट सारी ब्लैक फेस ईव के यूट्रस में हुई थी, पर डॉली का कोई भी इसके बॉडी के जो फीचर्स थे ब्लैक फेस ईव से नहीं मिलते थे, क्योंकि ब्लैक फेस ईव का न्यूक्लियस जो था वो रिमूव कर दिया गया था, और जो इसका एग लिया गया था उसमें जो स्कॉटिश डॉर्सेट फिन थी, उस फिन था शेप, उसको क्या किया था, उसमें इम्प्लांट कर दिया था. It would be interesting to note that although the Scottish blackface ewe gave birth to Dolly, it resembled the Finn Dorset sheep. I heard that babies inherit characteristics from both parents. But here, the sheep did not resemble the mother who had given birth to it. How is that possible? That happened because the cloned embryo received all the chromosomes from the normal cell of the Finn Dorset sheep, rather than a combination of genetic information from both the parents. अब देखो, ये जो क्रोमोसोम्स मिले थे डॉली को, वो सारे कहाँ से मिले थे? फिन डॉर्सेट शिप से. क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में होते हैं, और स्कॉटिश ब्लैक का तो न्यूक्लियस ही रिमूव कर दिया गया था इसके एक्सेल में से. तो इसीलिए जो सारे जो उसके करेक्टर्स थे वो किस में गए? किसके? सॉरी, जो फिन डॉर्सेट शिप थी उसी के सारे करेक्टर्स डॉली में रिजेंबल हुए. क्यों रिजेंबल हुए? क्योंकि डॉली की बॉडी में या डॉली के जो न्यूक्लियस में सारे सेल थे, क्रोमोसोम्स थे, वो किसके थे? फिन डॉर्सेट शीप के. स्कॉटिश ब्लैक को उसको एक भी करेक्टर नहीं मिला. So, it resembled only one parent, the Finn Dorset. Dolly was the first healthy clone of the Finn Dorset sheep, and later produced several offspring herself. Is cloning a sexual or asexual mode of reproduction? It is asexual mode of reproduction. Did you know that some scientists had even proposed to clone human beings? That would have been interesting. We could have created clones that would have taken care of all my chores. That idea, however, did not receive a lot of acceptance. Cloning almost always involves certain abnormalities. Even in the case of Dolly, she suffered from a lung disease as well as arthritis, which were unusual for her age. ठीक है, तो क्लोनिंग हमेशा सक्सेसफुल नहीं रहती है, कुछ ना कुछ उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं. जैसे डॉली, उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, लंग डिजीज हुई और आर्थराइटिस हुई उसको छोटी सी एज में, और बहुत जल्दी उसकी डेथ भी हो गई थी. Moreover, scientists still don't know how cloning could impact mental development. Therefore, many scientists, including Ian Wilmot himself, discouraged the cloning of human beings. However, there are advocates of human therapeutic cloning who believe that the practice could help in producing organs for transplantation. Did you know the idea of cloning has been the subject of some movies, including Woody Allen's Sleeper? Congratulations! You have completed the lesson on asexual reproduction in animals. In this lesson, you have learned to define asexual reproduction, explain the method of binary fission using the amoeba as an example, explain the method of budding using the hydra as an example, and explain the process of cloning. Hope you enjoyed this learning experience.